Hello students, here in this audio video I will explain you only the expenditure methods numerical. Let us see this question number 34. Calculate national income and net national disposable income. So since net national disposable income is not part of our syllabus, we will do only national income under expenditure method. Here what we see, we have government final consumption. First of all, net change in stock, government final consumption expenditure, current transfer, net current transfer to abroad, gross domestic fixed capital formation, private final consumption expenditure, net import means export minus import, net import, depreciation, net factor income from abroad to abroad, net indirect taxes, net capital transfer to abroad. These things are given. So first of all, I am telling you under expenditure method, please be attentive. Under expenditure method, we know that GDPMP, gross domestic product at market price, is equal to private consumption expenditure. So here private final consumption expenditure given, yes. Then government final consumption expenditure given, yes, given. Private final consumption expenditure 500, government final consumption expenditure 100. Okay. Then gross domestic fixed capital formation means investment expenditures, that is also given 200. Change in stock, that is also given 50. And net import, if it is net import, then it will be subtracted. If it would have been net export, then it would have been added. So net import. Okay. So first of all, we will find out GDPMP. How? Private final consumption expenditure 500 plus government final consumption expenditure 100, 600 plus gross domestic capital formation 200, 800 plus net change in stock 50, 850 plus net import. Actually this is import, so it will be minus 850 minus 40, that will be 810 is the GDPMP. GDPMP. Here this, see what formula is given, and directly given NNPFC, private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net change in stock, and net import is negative, so it will be minus. तो हम यहाँ तक अभी सिर्फ काम कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा GDPMP. सो कितना आया था 810. एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान दीजिए. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, 600 प्लस कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर, gross domestic fixed capital formation 200, 800 plus change in stock 50, 850 minus net import 40. So 810 crore Arabs in Arabs is the GDPMP. From that GDPMP, we will, if you will subtract depreciation 70 rupees 70, so 810 minus 70, we get 740. That is the NDPMP, net domestic product at market price. Then from that we will subtract net indirect taxes 120. So 740 minus 120, we will get 620. That will be the NDPFC factor cost, because we have already subtracted indirect taxes. And from that NDPFC, if we add net factor income to abroad, that is minus negative, it will be subtracted 10. तो 620 10. It is already, एक्चुअली में यहाँ देखिए लिखा हुआ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एंड दैट इज टू अब्रॉड मीन्स माइनस होता है, लेकिन ऑलरेडी हम माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 620 प्लस 10 630 अरब्स. ओके, ये 630 अरब आ गया हमारा नेशनल इनकम. ध्यान दिए क्या किए, पहले बताइए मैंने व्हाट आई हैव डन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 plus government final consumption expenditure 100 plus
Domestic capital formation 200, 800 plus change in stock 50, 850 plus net export, but here is net import, so it is minus 850 minus 40, 810, and then plus net factor income from abroad. Here net factor income from abroad to abroad, and that is also negative, so it is subtracted but already minus, so it will be added. So plus 10. So 620 plus 10, 630 Arabs is the national income, NNPFC. Okay. Here also in this questions 35 we can apply expenditure method. Let us see what are given. Closing stock, and here given 1 number में closing stock and 5 number opening stock. So closing stock 10 and opening stock 20. The difference is minus 10. That is the change in stock. Minus 10. Keep remember. Consumption of fixed capital means depreciation. Not needed at present. Private final consumption expenditure 600. Export 50 and import 60. Again it will be negative. Export minus import. Net export negative 10 आएगा. Minus 10. Okay. Government final consumption expenditure 100. Net domestic capital formation 80. करंट ट्रांसफ़र जो भी हो सब तो लेते नहीं हैं. कोई भी करंट ट्रांसफ़र हो, कैपिटल ट्रांसफ़र हो, ट्रांसफ़र इनकम कुछ भी हो नहीं लेते हैं. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ओके 30. तो ये माइनस हो जाएगा. चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है जीडीपीएमपी निकालने का. जीडीपीएमपी अंडर एक्सपेंडिचर मेथड इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 100. 600 प्लस 100 700 प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर 80. तो 780 प्लस चेंज इन स्टॉक. तो चेंज इन स्टॉक यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 10 और ओपनिंग स्टॉक 20. तो प्लस 10 कर देंगे, कितना आता था 6 प्लस 1 780 प्लस 10 690 माइनस 20. तो 670 प्लस एक्सपोर्ट 50. फिर से हम देख रहे हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 तो 700 प्लस कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर 80 780 प्लस चेंज इन स्टॉक तो अलग अलग है. क्लोजिंग स्टॉक प्लस 10 कर देते हैं तो हो गया आपका 790 माइनस ओपनिंग स्टॉक 20 770 देन प्लस एक्सपोर्ट 770 प्लस एक्सपोर्ट 50 तो 820 माइनस इम्पोर्ट 60 820 60 760. तो वी गेट GDPMP. फ्रॉम दैट GDPMP 600 से कितना 760 वी विल सब्ट्रैक्ट depreciation 40 720 then we will subtract not indirect taxes not given, taxes not given, so we will assume that taxes are 0. Net indirect taxes we will only subtract net factor income to abroad. Forty is what? Export, import. Consumption of fixed capital is subtracted. Again I am checking. Private final consumption expenditure 600 plus government final consumption expenditure 100 700 remember plus domestic capital formation 80 780 plus change in stock. So plus change in stock is here closing stock 10 and opening stock 20 so minus 10 so 780 minus 10 770 plus net export. So net export is export 50 and import 60 again minus 10 so 770 minus 10 760 is the GDPMP. And in that GDPMP if you subtract depreciation 760 में से depreciation 40 माइनस करेंगे तो 720
720 में से नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का काम नहीं है दिया हुआ तो नहीं घटाएंगे 720 और उसमें जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 30। अच्छा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव हेयर टू अब्रॉड 30 तो माइनस हो जाएगा। यस तो 730 is the net domestic product at market price, and again depreciation market price. Here actually indirect taxes is not given, that's why 600 plus 100 plus 80 minus 10 तो 780 minus 20 हो गया 760 minus 30। हाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 730 एंड देन डिप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेड 40 तो माइनस करना पड़ेगा तो वही माइनस 40 करेंगे तो 730 minus 40 690 शुड बी द नेशनल इनकम। हियर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट सब्ट्रैक्टेड। Oh अच्छा net domestic capital formation is given, that's why if net domestic capital formation is given then we will not take consumption of fixed capital, right? Yeah, net domestic fixed capital formation whenever given we will not take we will not take consumption of fixed capital, that's why 40 is ignored. So we have here NDP, NNP, MP, and if we assume that taxes is 0 then it is 730 Arab is the national income. Okay. So we have discussed two questions.